हमारे young members or the members who are in the process of qualification, technically they are very strong. The problem comes when they are asked to represent, they are asked to give the presentations or something like that. We ICAP need to showcase our ICAP brand not only nationally but internationally. Technology revolution is there. We can't close our eyes. अस्सलाम वालेकुम। आज हमें ज्वाइन किया है मिस्टर ज़ीशान इजाज ने। ये सीनियर मेंबर हैं आईकैप के और केपीएमजी ऑडिट फर्म में एज अ पार्टनर सर्व कर रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच मेहताब साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो आप अपना काइंडली एक शॉर्ट हमारे साथ जर्नी शेयर कीजिए। किस प्रोफेशन में आपका जर्नी कैसा रहा? If you ask me, it has been a very good journey, almost 30 years. I started my career with the firm KPMG back in 96. 2000 onward, I've been tax. 2009, I became a partner in tax. And 2000, now this year, I'm, in addition to being the tax partner, I'm the office management partner of Lahore office. सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि आपने एक्सपर्टीज किन कोर एरियाज में हासिल की ड्यूरिंग दिस ह्यूज ड्यूरेशन? एक्सपर्टीज में मेरा करियर एक्चुअली 2000 से ऑनवर्ड टैक्स में स्टार्ट हुआ। टैक्स में फिर देन आई एडेड कॉर्पोरेट अफेयर्स, स्टेट बैंक रिलेटेड। लास्ट 4-5 years have been even more diversified, जिसमें रीजनल लेवल पे आई हैव बीन प्लेइंग माय रोल। VAT implementations, offshoring, Saudiya, practically Oman, Bahrain, Qatar, Kuwait. So you can say not only in Pakistan, but I have been quite active on the regional level. माशाल्लाह। सर, क्योंकि आप अभी आईकैप के इलेक्शन में भी कंटेस्ट कर रहे हैं और उसके लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं हम आपको, तो आपका एजेंडा क्या होगा? किस एजेंडे के साथ आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं? एजेंडा देखें, 2-3 चीजें हैं। इससे पहले कि मैं एजेंडे पे आऊं, नंबर 1 was why I want to contest ICAP elections. That's very important. इसमें जैसे मैंने आपसे पहले शेयर किया, I have spent almost 20-21 years in tax and corporate affairs and affairs related to state bank. So practically मेरा connect रहा है with the regulators in Pakistan. So I think considering the circumstances we are going through now, that connect is very important. That connect has to be there to take ICAP at a level where we can cope up with the challenges we are facing actually. So that's an area we think I can add value. Apart from that, मेरा जो regional presence रही है, उसमें I can definitely add value. I can somehow have a connect between our overseas chapters and the different bodies there so that we can take or face the challenges being faced by ICAP and the international level. Right, sir. तो अभी हम एजेंडा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, एजेंडा में माय नंबर 1 पॉइंट इज रिलेटेड टू द यंग मेंबर्स, जिसमें मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि हमारे यंग मेंबर्स और द मेंबर्स हु आर इन द प्रोसेस ऑफ क्वालिफिकेशन, ये टेक्निकली दे आर वेरी स्ट्रांग. द प्रॉब्लम कम्स व्हेन they are asked to represent, they are asked to give the presentations or something like that. So that's the area we need to work on. They need to actually uplift their soft skills. और हमें ना सिर्फ firms level पे इस चीज़ पे effort करने की ज़रूरत है, बल्कि I think prior to that, जब हमारा students ये opt करके बैठा होता है और वो education CAF से पहले हमारी educational institutes के पास होता है, that's an area we should be working on their presentation skills. Once they have done that, उसके बाद the training at the firm level, the combination of that is going to be a very, very good mix. Second part is more related to the governance part. I would love to say that I'm actually a team player. I believe in a team. And I believe that for the growth in the modern world, you need to have a team. You need to have a proper delegation of duties so that everybody can know that what's their specific role is. And the council is concerned that should be more on to the policy making and stuff like that.
and operational and related affairs should be delegated to the specialist team who should take care of those affairs. Then there is another important part which is related to branding. That I think a very important area. We ICAP need to showcase our ICAP brand not only nationally but internationally. उसके सिलसिले में हमें ओवरसीज चैप्टर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है, हमें डिफरेंट बॉडीज को एंगेज करना पड़ता है. We should do that because this is going to be a world where we need to step out and we need to showcase ourselves to the public that look, here we are and that's what we are capable of. That's another area. Then there are a couple of other parts मैं briefly touch upon करूँगा on those areas जिसमें broadly अगर आप देखें तो it's more like ICAP's role as a facilitator. ICAP should play an important role to facilitate their overseas members. Overseas members के बहुत छोटे-छोटे problems हैं. उनके कुछ ऐसे issues हैं which can be taken care. They need hand holding back home. They have a very good connect internationally in their relevant jurisdictions. So हमें उनको थोड़ा सा empower करने की ज़रूरत है. हमें उनके connect को utilize करने की ज़रूरत है in order to actually achieve a common goal so that ICAP as a brand could be showcased internationally. Then there is another area which is related to female members. I think during my various meetings with the female members, one of the major concern is the problem they face after their mid-career breaks. So I think उस पे हमें कुछ ना कुछ trainings या कुछ sessions करने की ज़रूरत है जहाँ पे they can upscale their educational skills. As far as practical skills are concerned, that's definitely not going to be there, but they should be up to the mark from the knowledge-based perspective, so that after their break, mid-career break, they should be at least at the level. They should not face any problem when they get into the market. Right. Then there is the last part, which is related to SMPs. I think we should facilitate them. We should uplift them. We should actually upscale their expertise in order to face the challenges of the new world, wherein not only different regulators are jumping in, but also we have a technology issue, and we can't close our eyes and work in a closed environment without upgrading ourselves on the technology perspective. So broadly, these are the major areas. Right. सर यहाँ पे एक कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन तो आपने खुद ही एड्रेस कर दिया, जो कि मेरा नेक्स्ट होना था, और इसकी बहुत ज्यादा हमें नीड है कि हमारी कम्युनिकेशन पे फर्म लेवल से ही काम स्टार्ट हो. जो ये तो आप बहुत अच्छा आपका पॉइंट था सर. और जो दूसरी सर आपने एक पॉइंट रेज किया ओवरसीज हमारे मेंबर्स के लिए, तो यहाँ पे एक और पॉइंट मैं क्वेश्चन रखना चाहूंगा यहाँ पे कि फैसिलिटेट तो हमें करना चाहिए, बट क्या हमें टेक्नोलॉजी में भी हेड टू हेड नहीं होना चाहिए वर्ल्ड के साथ, जिस तरह ICEW या ACC अपने सिलेबस में चेंजेस करते हैं या अपने मेंबर्स को वो बताते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, तो क्या हमें भी इस फील्ड में आगे आना चाहिए? डेटा एनालिटिक्स आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि बिजनेस में बहुत कोर एरियाज बनने वाले हैं फ्यूचर में सर. That's very correct. Actually, when I talk about that upscaling the young members and everything, उसमें एक जो मेजर एरिया है वो टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से. टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन इज देयर. वी कांट क्लोज आवर आईज एंड कीप ऑन डूइंग व्हाट वी हैव बीन डूइंग फॉर एजेस एक्चुअली. तो हमें अपने आप को अपस्केल करने की जरूरत है. हमें विद अ पॉजिटिव माइंड फ्रेम हमें इसको डिजिटल डिसरप्शन की बजाय अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की जरूरत है. इफ वी स्टार्ट थिंकिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी, then the next stage is we should actually upscale our technological knowledge little bit, so that having a knowledge from the perspective of business and the finance side, we are in a better position to cope up the challenges of the modern business, having the business knowledge as well as a basic technological knowledge. सर थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने हमें ज्वाइन किया, गाइड किया. कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा एलिमेंट था और टेक्नोलॉजी वाला, जिसको हम हेड टू हेड कर सकते हैं, अपने मेंबर्स को, अपने प्रोफेशन को आगे ला सकते हैं. वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर अपकमिंग इलेक्शंस. कि अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाब करें. थैंक यू सो मच मेहताब साहब.
prayers I definitely need. And for all the viewers who are watching, actually, my serial number is 16, and do cast your vote. I'm standing for the council election from North Zone A. Thank you very much. Thank you.